So in this video we are going to discuss about Liferaft and the requirements as per SOLAS. I've already covered a video on requirements for lifeboat. So now we'll be discussing about Liferaft. See, every Liferaft shall be constructed as to be capable of withstanding exposure for 30 days afloat in all sea conditions. Means कि उसको exposure जो भी sea conditions होते हैं, wave, winds, water, salt water, ये सब उसको withstand करना है कितने दिन के लिए? For 30 days it need to withstand. The life raft shall be so constructed that when it is dropped into the water from a height of 18 meter, अगर उसको 18 meter के height से हम drop करें, so if we are dropping it from a height of 18 meter, the life raft and its equipment shall operate satisfactorily. उसके equipment और life raft ये satisfactorily work करने चाहिए. If the life raft is to be stored at a height of more than 18 meter, if it is stored at a height of more than 18 meter above the water line in the highest sea going condition, it shall be of a type which has been satisfactorily drop tested from at least that height. So we need to drop test. ये drop test उसका करना है अगर इससे ज़्यादा हो, क्योंकि इतना तो ये मैन्युफैक्चरर ही बना के देता है. अदरवाइज इफ इट इज मोर देन दैट देन ड्रॉप टेस्ट हैज टू बी सेपरेटली डन फॉर दैट लाइफ राफ्ट. ठीक है. और इस पे क्या है कि लाइफ राफ्ट जब लॉन्च हो जाता है, बिकॉज लॉन्चिंग का अलग अलग मेथड होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सो लॉन्च होने के बाद व्हाट वी आर सपोज टू डू कि उस पर लोग ड्रॉप करते हैं. अगर उस पर ड्रॉप करते हैं तो capable of withstanding repeated jump onto it from a height of at least 4.5 मीटर. अगर 4.5 मीटर का repeated jump हो उसके ऊपर तब भी वो withstand करना चाहिए above its floor, उसके फ्लोर के, both with and without the canopy erected. canopy erect हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में 4.5 मीटर का उसके ऊपर repeated jump उसका फ्लोर withstand करना चाहिए. The life rafts and fitting shall be so constructed as to enable it to be towed at a speed of 3 knot. इसको क्या करना है? टो करना है 3 knot के स्पीड से. फिर इसको हम अटैच करते हैं रेस्क्यू बोट या लाइफ बोट के साथ, तो उसमें भी उसकी रिक्वायरमेंट की स्पीड दी हुई है. वॉच दैट वीडियो. स्पीड ऑफ 3 knot इन काम वाटर व्हेन लोडेड विथ इज फुल कॉम्प्लीमेंट. जब फुल्ली कॉम्प्लीमेंट में लोड हो जाए तब इसका नहीं होना चाहिए, और सी एंकर उसका स्ट्रीम्ड होना चाहिए. The life raft shall have a canopy to protect the occupant from exposure because sea conditions can be harsh. So life raft की canopy होना चाहिए जो उसको protect करना चाहिए, which is automatically set in place when the life raft is launched from and waterborne. No life raft shall be approved which has a carrying capacity of less than 6%. जो 6% से कम carrying की capacity हो उसको approve नहीं करना चाहिए, unless the life raft is to be launched by an approved launching appliances or is not required to be stored in a position providing for easy side to side transfer. The total mass of the life raft, its container and its equipment shall not be more than 185 kg. टोटल मास जो उसका 185 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि उसके कंटेनर, equipments, everything combine करके. The life raft shall be fitted with an efficient painter of length equal to not less than 10 meter. 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोर्ड पोजीशन, जहाँ पे वो स्टोर्ड किया गया है, प्लस उसका डिस्टेंस टू द वाटर लाइन तक इन द लाइटेस्ट सी गोइंग कंडीशन, और 15 मीटर विच एवर इज ग्रेटर. या तो 10 मीटर प्लस जिस हाइट पे उसको स्टोर किया गया है सी गोइंग लाइटेस्ट सी गोइंग कंडीशन में, या फिर 15 मीटर जो भी ज़्यादा होगा. अभी जो डेविड लॉन्च्ड लाइफ राफ्ट होते हैं, इन एडिशन टू द अबव रिक्वायरमेंट, इसके अलावा जो डेविड से लॉन्च होते हैं लाइफ राफ्ट for use with an approved launching appliances shall, when the life raft is loaded with its full complement of person equipment, be capable of withstanding a lateral impact. मतलब उसमें lateral impact मतलब साइड जो जर्क होता है ना, वो impact जो है against the ship side, हो सकता है कि वो शिप में आके कोलाइड करे at an impact velocity of not less than 3.5 मीटर पर सेकेंड. तो इतना ये जो है विथस्टैंड करना चाहिए. ड्रॉप टेस्ट, ड्रॉप इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ नॉट लेस देन 3 मीटर, और उसको 3 मीटर हाइट पे वाटर में ड्रॉप करना चाहिए बिना उसके कोई फंक्शन को डैमेज करते हुए, बिना किसी इक्विपमेंट को डैमेज. बी प्रोवाइडेड विथ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग द लाइफ राफ्ट अलोंग साइड द एम्बार्केशन डेक एंड होल्डिंग इट सिक्योरली ड्यूरिंग एम्बार्केशन. ठीक है. लाइफ राफ्ट को एम्बार्केशन लैडर, एम्बार्केशन डेक के पास लाने की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए.
Every passenger ship David launched Liferaft shall be so arranged that it can be rapidly boarded by its full complement of person. Rapidly वो board हो जाना चाहिए, मतलब easily access होना चाहिए. Every cargo ship David launched Liferaft shall be so arranged that it can be boarded by its full कॉम्प्लीमेंट ऑफ पर्सन इन नॉट मोर देन 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट से ज़्यादा नहीं समय लगना चाहिए, सब लोग उसको बोर्ड कर लेने चाहिए फ्रॉम द टाइम द इंस्ट्रक्शन टू बोर्ड इज गिवन. द मार्किंग रिक्वायर्ड ऑन लाइफ राफ्ट equipped in accordance with LSA code regulation 4.1.5.1 equipment contained in a life raft find below shall be SOLAS A pack in block capital of the Roman alphabets. अभी यहाँ पे तो आपने हमने रिक्वायरमेंट पढ़ा कि जनरल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए और डेविड लॉन्च के लिए अलग से क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए. उसके अलावा कि व्हाट आर द मार्किंग्स, दिस कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन इन द ओरल. सो मार्किंग के केस में एलएसए कोड का ये रिक्वायरमेंट है, इसके रेगुलेशन के, इसके क्लॉज के, सब क्लॉज के, उस पे रोमन अल्फाबेट में जो भी होना चाहिए लिखा होना चाहिए, और वो सोलस पैक ए ये लिखा होना चाहिए. दो पैक होता है, सोलस पैक ए और सोलस पैक बी. इन केस ऑफ पैसेंजर शिप्स engaged on short international voyage of such a nature and duration that in the opinion of the administration not all the items specified in paragraph A are necessary and solus pack B should be marked in block capital. तो उसमें block solus pack B होना चाहिए. The life raft painter system shall provide a connection between the ship and the life raft and shall be so arranged as to ensure that the life raft when released, and in case of inflatable life raft, inflatable is not dragged under by same sinking ship. If a weak link is used in the float free arrangement, it shall not be broken by the force required to pull the painter from the life raft container. अभी ये जो HRU की बात हो रही है, if applicable to be sufficient strength to permit the inflammation of life raft and break under a strain, कितना strain पड़ना चाहिए जो कि ये वीक लिंक उसको कट करे पेंटर को. So this is 2.2 plus minus 0.4 kilonewton. Okay, the life raft shall be packed in a container that is so constructed as to withstand hard wear under condition encountered at sea. अभी ये जो कंटेनर वहाँ पे होता है फाइबर का होता है वो मोस्टली, जिस कंटेनर के अंदर लाइफ राफ्ट बंद होता है उसके सिलेंडर के साथ, उसके बारे में बताया गया कि उसकी क्या होनी, ये हार्ड केसिंग होता है वो, ऑफ सफिशिएंट इनहेरेंट बॉयंसी, उसके अंदर एक इनहेरेंट बॉयंसी होती है व्हेन पैक्ड विद द life raft and its equipment to pull the painter from within and to operate the inflation mechanism should the ship sink. As far as practicable, watertight except for drain holes in the container bottom. The container shall be marked with, कंटेनर पे क्या क्या मार्किंग होनी चाहिए, हमने जो ऊपर देखा था वो देखा था हमने कि लाइफ राफ्ट पे क्या क्या मार्किंग होनी चाहिए. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइफ राफ्ट के कंटेनर पे क्या क्या मार्किंग होनी चाहिए. मेकर्स नेम और ट्रेड नेम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी एंड द नंबर ऑफ पर्सन इट इज परमिटेड टू carry, SOLAS type of emergency pack enclosed, date when last serviced, length of painter, maximum permitted height of stowage above water line depending on drop test height and length of painter. Launching instruction, ये बताया था मैंने, length of painter 10 meter plus the height at which it is stored or 15 meter whichever is greater. नॉर्मल इक्विपमेंट क्या होता है, वन buoyant rescue colt attached to not less than 30 meter of buoyant line, one knife of non-folding type having a buoyant handle and lanyard attached and stored in a pocket on the exterior of the canopy near the point at which the painter is attached to the life raft. In addition, a life raft which is permitted to accommodate 30 person or more shall be provided with a second knife which need to be of the non-folding type. For a life raft which is permitted to accommodate not more than 12 person, one buoyant bailer. For a life raft which is permitted to accommodate 30 person or more, two buoyant bailers, two sponges, two seagoing anchors, each with a shock resistance hawser and tripping line is fitted, one being spare and the other permanently attached to the life raft in such a way that when the life raft inflates or in waterborne, it causes the life raft to lie oriented to the wind in most stable manner. Okay. Now, two buoyant paddles, three tin openers and a pane of scissors, safety knives containing special tin opener blades satisfactory for the requirement, one first aid outfit in a waterproof case capable of being closed tightly after use, one whistle for equivalent sound signal, four rocket parachute flares, six hand flares, two buoyant smoke signal, one waterproof electronic torch suitable for more signaling with one spare set of batteries, an efficient radar deflector, one daylight signaling mirror, one copy of life-saving signals,
one set of fishing tackles, one food ration totaling not less than 10,000 kilojoule. This can be asked कि what is the energy, uh, okay, and watertight receptacles containing a total 1.5 liter of fresh water for each person the life raft permitted to accommodate, of which either 0.5 liter per person may be replaced by a desalting apparatus. So there is a desalting apparatus जिससे कि हमें वो बनाना है. Amount of fresh water in 2 days or 1 liter, one rust proof graduated drinking vessel. Anti seasickness medicine sufficient for at least 48 hours and one seasickness bag for each person to govern. Instructions on how to survive. Instruction for immediate actions and therma protective aid sufficient for 10% of the number of person the life raft is permitted to accommodate, or two, whichever is greater. So these are the requirements, SOLAS requirements for life raft, and as well as some extra requirement for debit launched life raft. Okay, what we also saw, what are the markings on life raft, what are the requirements for the markings, what are the requirements for the container in which the life raft is stored, and what are markings on the container. So these are few different 3-4 questions that can be asked all together from here. Thank you so much.